Hello guys, good evening and welcome back once again to Data Readers YouTube channel. As you all know, what we were up to was we were we are continuing with a comprehensive course on NumPy and this is our second video. ठीक है, कल तक आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे NumPy पर, हम लोगों ने डायमेंशंस निकाले, शेप्स चेंज किए. ठीक है, we read about slicing a 2D array using NumPy. We learnt about how to use the submodule mat. We learnt about NumPy array indexing, ठीक है, or how to access the elements of 2D and 3D array. So today we will be starting with NumPy array joint, ठीक है, how to join a NumPy array, ठीक है. For this I will directly be coding and showing you, ठीक है. देखते हैं कैसे काम होता है. So let's see. See, I have opened my Jupyter. So let's see how actually join works. ठीक है. पहले हम लोग क्या करेंगे? We will simply numpy को हम लोग import करेंगे. ठीक है. Just a second. Yeah. First we will be importing numpy, and after that we will be taking two arrays. ठीक है. Namely array one. Let's say. All right. Dot array, and let's put in array inside it 1 comma 2 comma 3, ठीक है, and another array, ठीक है, we put in 4 comma 5 comma 6. So now what we will do is we will be joining them using numpy. All right, and let's name it a means array, ठीक है. I'm taking the variable name as arr. So let's concatenate the function, ठीक है. The function to join is concatenate, ठीक है. The function to join is concatenate, ठीक है. concatenate function यूज करके हम लोग इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, arr1 comma arr2, ठीक है. And now if we print this two, then you can see as the result that it has been printed together. See, as you can see, the result 1 2 3 4 5 6 have been printed together. So this is how actually the basic concept of joint stands for. All right, now for example, say we have a 2D array and we want to join it along a given axis. We want to join it along axis 1. So how we are going to do it? All right, let's see. Again, let's see. We will import numpy as np, and after that what we are going to do is we are going to create an array. Let's say to the array arr1 is equal to np dot numpy 1 comma 2 the array. Then 3 comma 4. All right, now let's close another bracket. So this is our first 2D array, and then we are going to have another 2D array. Sorry, array. One comma two, like 1 comma 2 हो गया, 4 भी हो गया, 5 comma 6 comma 7 comma 8. All right, now we will be writing the statement to concatenate an array along a given axis.
as you can see here I'm going to declare the axis. ठीक है, तो एक्सिस अगर हम लोगों को किसी गिवन एक्सिस के अलोंग concatenate कराना है then we will be specifying the given axis in the form of axis is equal to 1. The form of axis is equal to 1. ठीक है, and after that we will print the array as you can see in the result. As you can see in the result 1 2 5 and 6, since it is along say along the same axis, ठीक है, it has been printed together, and 3 4 7 8 has been along the same axis, so it has been printed as 3 4 7 8 together. All right, I think it is clear to you all. All right, now we can use another function to print actually to join a numpy array, and that function is stack. ठीक है, तो देखते हैं stack मेथड के मदद से हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. I would request you to look in the first block. I will be making the specific changes inside that very block. All right, so if we write over here stack, ठीक है, अगर हम यहाँ पे stack लिखते हैं तो भी देखना it's getting joined. ठीक है, पर when we stack it you could find that it has been stacked one over another. ठीक है, पहले 4 5 6 स्टैक हुआ, उसके ऊपर 1 2 3 स्टैक हुआ. ठीक है, it stacks the element. This is normal stack. Now if we want to stack it along the column, ठीक है, if we want to stack it along the column we will write v stack. All right, now if you see the result you can see that it has been stacked along the column. Actually it was previously also it was stacked actually along the column. Now we will do d stack. All right, now as you can see it has been stacked according to row wise. It has been stacked along the row, it has been stacked, so 1 4 2 5 3 6. Now if you want to stack it along the height, ठीक है, instead of d you just put h over here. All right, and as you can see it has been stacked all together 1 2 3 4 5 6, ठीक है, along the height. So this is how basically stack works. ठीक है, now we will be learning about splitting a given numpy array. ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग एक गिवन एरे को स्प्लिट करें. ठीक है, so suppose here we will be writing the code. ठीक है, in the third block import numpy as np. Next line we are creating an array. Let's say arr is equal to np dot array ब्रैकेट में एक array लिख लो 1 2 3 4 5 6. ठीक, this is our array. Now what we are going to do is we are going to split this array into 3 different arrays. ठीक है, how we will do that? Let's name the new array to be new arr, and then np dot array underscore split, and then inside this we are going to put the name of the array, and after that we will be mentioning in how many parts we want to split the array. In this case it is 3. All right, and now let's print the new array. So let's see the result. As you can see the result, it has been splitted into 3 different arrays. All right, okay, so this is the thing. And one more thing I would like to tell you all. Let's open the Jamboard. All right, let's open the Jamboard. एक छोटा सा difference है, ठीक है, there is a small difference which I want you all to clarify. uh, just a second. So जैसा कि पिछले क्लास में मतलब पिछले क्लास में नहीं,
बेसिकली जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग जब स्ट्रिंग में स्प्लिट फंक्शन यूज करते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास आउटपुट होता था, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 is there as an array and now you want to split this into three different arrays, ठीक है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो there are even number of elements and you want to divide it into odd number of elements, ठीक है। So split in this case will not work because split doesn't do automatic adjustment of the elements. All right. But if you use array underscore split, you will find that the elements have been auto adjusted. In the sense, it you can see the output as arr, array 1, 2, array 3 and array 4. So this will be your output. तुम चला के देख लेना, अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं होता तो you will find out this thing as a whole. ठीक है, so there is a lot of difference between split and array underscore split. ठीक है, so this was the thing I wanted to make clear of. Next thing which we are up to is we will be learning about searching a numpy. ठीक है, मान लो कि किसी इंडेक्स पे x प्रेजेंट है, अरे के किसी इंडेक्स पे x प्रेजेंट है and we want to search in which index it is present. So there is a keyword or a function dot where, ठीक है, using that we can easily find out the index where the element is लोकेटेड, ठीक है। तो और ना पहले करते हैं यार, फिर तुम लोगों को जब क्लियर होगा तो नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। सो इंपोर्ट numpy as np, ठीक है। नेक्स्ट एक अरे बनाते हैं, अरे इज इक्वल टू np डॉट अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 7. So this is our array and we will be basically trying to find out the locations where 4 is situated. So np dot where. So focus on this where because this keyword helps you to, or this function helps you to find out at what index the desired element which you are searching is present. ठीक है, अंतर डाल दो ARR is equal to 4, ठीक है, और फिर प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट करेंगे x भाई साहब को, प्रिंट कर देंगे x भाई साहब। तो जैसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे, as you can see the indexes where 4 is present are 3, 6, 7 and one more thing as you can see. All right, so 3, 4 and 6 which is present over here, as you can see, is the location or the indexes of the array. And this 3, 6 and 7, and this 6, 3, 6 and 7 is nothing but a tuple. Okay, tuple collection data type which is carrying the index numbers of the element 4 जो हम लोग ढूंढ रहे थे अपने गिवन array में। तो आई थिंक तुम्हारे लिए ये बात पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मान लो कि तुम्हारे पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है एंड यहाँ पे जैसे पहला इंडेक्स जब फर्स्ट ऑकरेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग मूव करते जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमें 4 का इंडेक्स मिल रहा था। इफ आई वांट टू, ठीक है, if I want to get the indexes of a given element from the rightmost side, तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? So for that reason, one more thing, just imagine, मतलब just assume कि हमारा जो given array है इस केस में it is already sorted, ठीक है, already sorted, एक sorted array ही हम लोग इसमें डालेंगे। तो
थाम के बैठो और आगे देखो। एक एरे है हमारे पास, इसका नाम में हम डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 9। ठीक है, दिस इज आवर अरे। ठीक, कॉमा 4, 4 डाल दिए, कॉमा 4। नाउ now here, as you can see, as you can see, x is equal to np dot where arr comma 4 comma side is equal to right। ठीक है, चलो चलाते हैं इसको और प्रिंट करते हैं किसको, प्रिंट करेंगे हम लोग x को। सो एज यू कैन सी, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सो एज यू कैन सी, ठीक है, जितने भी इंडेक्सेस है फ्रॉम द राइट मोस्ट राइट हैंड साइड। अच्छा रुको रुको रुको, एक गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को लिखना है सर्च सॉर्टेड। ठीक है, दिस इज द कीवर्ड which we are going to use in this place, but search sorted array a search window must be left or right। Only in a sort, oh sorry, because this is not a sorted array, so we cannot basically use it। ठीक है, because it is not a sorted array, we are not using a sorted array। So as you can see, when you use a sorted array and give this following code, you can easily find out that the index of the rightmost element has been printed। All right, the next thing which we are going to learn is creating a filter। ठीक है, what is a filter, इसको समझते हैं। So what is a filter array? What is a filter, sorry, what is a filter array? ये filter array होता क्या है? Filter array is nothing but the array whose indexes have been changed, whose index have been changed into boolean data type। ठीक है, बेसिकली इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 3 इंटीजर टाइप होता है। तो जब मैं इस इंडेक्स को चेंज करके बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, फिल्टरिंग एन एरे। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग फिल्टर, उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू प्रिंट द इवन नंबर्स ऑफ अ गिवन एरे। ठीक है, ठीक है, तो फिर import numpy as np, चलो नीचे arr is equal to np dot array। ठीक है, np dot array bracket open close 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नाउ जहां जहां इवन नंबर होगा वहां वहां हम लोग ट्रू प्रिंट कराएंगे इंडेक्स, और जहां जहां ऑड होगा वहां वहां हमारा जो इंडेक्स होगा इट विल बी नथिंग बट फॉल्स। ठीक है, तो कैसे करें, इसके लिए एक एम्प्टी फिल्टर एरे बनाते हैं। ठीक है, नाम देते हैं इसका फिल्टर, एक एरे बनाते हैं, नाम देते हैं फिल्टर। चलो, अब फॉर आई इन arr एक लूप चलाएं, through all the elements of the array, and then after that if I modulus 2 is equal to 0, ठीक है,
is equal to 0, then what we will do, filter underscore arr dot append, क्या कर देंगे इधर, ट्रू कर देंगे, ठीक है, else filter underscore arr dot append, ब्रैकेट के अंदर कर दो क्या, false, ठीक है. After this all has been done, come out of the for loop and outside the for loop create a new array where arr के अंदर डाल दो new सॉरी filter underscore arr, ठीक है, और प्रिंट कर दो इसको, ठीक है. बेसिक प्रोग्राम है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसका सिर्फ यही कर रहे हैं कि जब भी इवन आएगा उसका इंडेक्स हम लोग ट्रू शो करेंगे. चलो इसको घुमाते हैं अभी, जैसा कि घुमाया वैसे कि 2 4 6 8 आ गया, ठीक है, 2 4 6 and 8, ठीक है, and this was our new array and filter, हाँ, तो जैसे कि देख सकते हो इंडेक्सेस चेंज हो चुके हैं, ठीक है. सो आवर न्यू एरे हैज बीन 2 4 6 8 where the even numbers have been stored, और बाकी 1 के जगह पे false, 2 के जगह पे true, 3 के जगह पे false, 4 के जगह पे true, 5 के जगह पे false, मतलब जहाँ जहाँ even है वहाँ वहाँ true है, जहाँ जहाँ odd है वहाँ वहाँ false है. So this is an filter array which has been created, ठीक है. So this is where we come to the end of basics of NumPy. The next thing which we are going to learn is what is a random number, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, what is a random number. So अब अगर अभी किसी भी तरीके का तुम्हें कोई भी डाउट हो देन बेझिझक पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो ये सब हम लोग का हो चुका है. सो नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस 5 टॉपिक्स, दैट इज रैंडम नंबर, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम परम्यूटेशन, सी बॉन्ड एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज अ रैंडम नंबर, ठीक है. सबसे बड़ी सनसनी खबर इस मोमेंट की, व्हाट इज अ रैंडम नंबर. अब जैसे मैं तुम लोगों से पूछूंगा what is a random number, the answer which you all will be giving me is random number is any number that comes to your mind. Where that comes to your mind? No, my dear, in actually in this case it is not any number, ठीक है, not any number that comes to your mind. न्यू नंबर हर बार सोचूंगा, तुमको बोला कोई कि कोई नंबर रैंडम नंबर सोच लो, तो तुम कोई भी नंबर, एक नया नया नंबर हर बार सोचने लगोगे और उसको बोलने लगोगे. दिस इज नॉट अ रैंडम. रैंडम नंबर इज समथिंग बेसिकली, अगर तुमसे कोई पूछे आज के बाद कि यार रैंडम नंबर क्या होता है, रैंडम नंबर इज सम नंबर दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड लॉजिकली. क्या, दैट कैन नॉट बी, can't be, can't be predicted. how? logically. logically ये predict किया नहीं जा सकता, ठीक है. so this is a random, ठीक है. एंड रिमेंबर, और एक चीज, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा. व्हाट इज अ स्यूडो रैंडम नंबर. बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी रैंडम नंबर को हम लोग मशीन यूज करके जनरेट करते हैं, ठीक है. इन दैट केस, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं और उसको जनरेट करते हैं. इन दैट केस क्या होता है, इट इज नॉट ट्रूली अ रैंडम नंबर because we are using some algorithm and algorithm has a logic, so using that we are generating a random number. तो इसको हम लोग एक कंप्लीट रैंडम नंबर तो नहीं कह सकते, इसीलिए हम लोग इसको स्यूडो रैंडम नंबर कहते हैं, ठीक है. एंड हम लोग जो अभी मशीन लर्निंग में यूज करेंगे ना, बेसिकली वी विल बी यूजिंग स्यूडो रैंडम.
सो ठीक है, सो अगर अच्छा, नाउ व्हाट इज द फंक्शन टू find a random number? The function is random dot rand int, ब्रैकेट में डाल देना जितने मतलब रेंज। ठीक है, देखते कैसे काम करता है। So here there is a little change in the syntax, sorry, from, ठीक है, from numpy import what random, ठीक है, and after that x is equal to random dot rand int, और हम लोग कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, क्या काम करते हैं कि 5 रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। ठीक है, विद इन 200, 200 तक, 200 के अंदर 5 कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। उसके लिए सिर्फ 5 करूंगा मैं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइज डिफाइन कर रहा हूँ 5। ठीक है, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम x. So as soon as I print x, you can see any 5 random number up to 200 has been generated. Okay. So next is, अगर हम चाहे इस रैंडम नंबर को, ठीक है, रैंडम नंबर को along a given रो भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाओ और पहले साइज से पहले रो डाल दो। जैसे तुम रो डालोगे, जैसा कि देख सकते हो, 3 rows have been created with 5 random number each, but up to 200. ठीक है, so the next thing which we are going to learn is we are going, मान लो कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई एरे दिया हुआ है और उसमें से तुम्हें कोई भी एक रैंडम नंबर पिक करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, देखते क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल कीवर्ड यूज करना होता है, import from by import random। ठीक है, now x is equal to एक, सॉरी array बनाता हूँ पहले, array is equal to np dot ठीक है, and for choosing any number randomly from this array we will be using the function, actually sorry, x is equal to random dot choice, और ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ये तो डलेगा नहीं, ये आर, ठीक है, और फिर भाई साहब प्रिंट x, कोई भी एक रैंडम नंबर को पिक कर लिया जाएगा, जैसे कि इस केस में 5 को कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, सो इसको फिर से रन कराओ, it is picking up 5, so 5 is the random number it is picking up। ठीक है, so next, so this is all about random number basic, ठीक है, introduction। Next we are going to know what is data distribution। Next up to us is what is data distribution। So what is data distribution? So what is data distribution? It is basically a list of all possible values and how often each value occurs। ठीक है, it is list, फिर से सुन लो, list of all possible values and how often they occur। ठीक है, next probability, next we will learn about probability density function। बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, रैंडम, देखो कोई भी अगर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सेट है ना,
तो रैंडम नंबर दैट फॉलो अ सर्टेन, अब हर रैंडम नंबर एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है, मतलब बेसिकली कोड करके समझते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मान लो कि यही है, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन 19 नंबर पे तुम्हारे पास ये एरे गिवन है, ठीक है, दिस इज योर गिवन एरे। तो इस एरे में मैं यहाँ पे एक और चीज स्पेसिफाई कर देता हूँ। आई विल बी स्पेसिफाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहले वाले का मैं डालता हूँ 0.1 कमा 0.3 कमा 0.2 कमा 0.2 कमा 0.0 कमा 0.1, ठीक है। All right, and here we will be giving size is equal to 100. So now let's see what is the output. Oh, क्या क्या एरर है, क्या एरर है? numpy dot random m, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, मुझे एरर डालना। एक काम करते हैं, यहाँ पे एरर डाल देते हैं 1,2,3,4,5, हो गया। चलो अब इसको रन करते हैं, फिर से एरर है, क्या एरर है? प्रोबेबिलिटी, अच्छा सम इज, ओह सॉरी सॉरी, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 3 4 4 2 6 6 1 7, आई एम मेकिंग इट इक्वल टू 3। सो अब देखो प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 हो चुका है, एंड सी नाउ गिवन, एंड नाउ रैंडम नंबर्स हैव बीन जनरेटेड, कितने 100 रैंडम नंबर्स जनरेट हो चुके हैं, टेकिंग द रैंडम नंबर्स फ्रॉम द गिवन एरे व्हिच यू हैव गिवन ऑफ 1 2 3 4 5। और इनका अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच नंबर, देन यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हिच यू हैव गिवन फॉर द इंडिविजुअल, वही उसके साथ इक्वल होगा। सो दिस इज व्हाट आई मेंट टू से अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट परम्यूटेशन। तुमने 1 2 3 4 5 तो दे दिया, अब तुम्हें ना परम्यूटेशन क्रिएट करना है, वेरियस पॉसिबल अरेंजमेंट, मतलब वेरियस पॉसिबल फॉर्मेशन यूजिंग। तो पहले इंपोर्ट कर किया करते फ्रॉम numpy import random, ठीक है। नेक्स्ट, import numpy as np, नेक्स्ट ये r is equal to np dot array के अंदर, के अंदर 1 2 3 4 5, नेक्स्ट रैंडम डॉट शफल यूज करना है फंक्शन, क्या डॉट शफल, और इसको कर दूंगा क्या है एरे। तो देखना एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन विल बी शोन टू यू विद द एलिमेंट्स ऑफ ए आर, ठीक है। सॉरी, इसको मैक्स करता हूँ और इधर x इक्वल टू रैंडम शफल, जैसे कि देख सकते हो नन, ठीक है। So in this case no permutation has been created, इसीलिए ये नन दिखा रहा है। तो you can check out, ठीक है, बहुत सारे possible ways है, तुम बहुत सारे और permutations check कर सकते हो, ठीक है। This is what permutation function works। तुम यहाँ पे बहुत सारे और भी arrangement, मतलब set of elements डाल सकते हो, and you can make them shuffle, and as soon as you make them shuffle you can see various type of permutation with those elements of the array, ठीक है। now we are going to learn about cbond, ठीक है। cbond क्या होता है? c क्या, जो मैं बोला वो है cbond। so what is a cbond? basically what it does, it uses matplotlib, ठीक है। मैटप्लॉटलिब बोल के जो मॉड्यूल है,
उसको कहाँ पीछे यूज करता है, ठीक है, पीछे सी बॉन्ड का ये चलता रहता है, एंड यूजिंग दैट इट रीड्स द डेटा एंड प्लॉट्स अ ग्राफ। ठीक है, सिंपल है। प्लॉट्स द ग्राफ क्या करता है, किसको रीड करता है, मैट प्लॉट के मदद से डेटा रीड करता है और फिर इट प्लॉट्स अ ग्राफ। ठीक है, तो लेट्स विजुअलाइज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। ठीक है, फ्रॉम हियर थोड़ा बहुत एमएल का चस्का आने लगेगा, बिकॉज दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट। ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो एंड लर्न मशीन लर्निंग। सो import mat plot lib dot py plot। ठीक है, py plot as plt। next, import seaborn as sns। next, sns dot distribution dist plot 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5। ठीक है, and now let's see the plot by plt show bracket open close। सॉरी, ये मैट डॉट लिब हो गया है, मैट डॉट लिब। So as you can see, a graph has been plotted. ठीक है, and this graph has been plotted on the data which you have given, and इसके पीछे जैसे कि देख सकते हो मैटप्लॉटलिब से हम लोगों ने काम कराया है। ठीक है, and if we want to remove this histogram which is present behind this, ठीक है, पीछे देख सकते हो एक histogram बन गया है। What we will do is simply we will write over here hist is equal to false। hist is equal to false, and now let's run it, and as soon as you run it you can see that पीछे जो histogram था ये गायब हो चुका है। ठीक है, all right, now next which we are going to learn is about normal distribution। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, we will learn about normal distribution। तो पहले देखते हैं normal distribution होता क्या है। So basically speaking about normal distribution, normal distribution, इसका और एक नाम है, ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आफ्टर द ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट गॉसियन। ठीक है, सो इसमें तीन चीजें, तीन टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है एलओसी। ठीक है, एलओसी फंक्शन ये क्या कलेक्ट करता है, ये मीन बताता है। कैसे, मीन क्या होता है, ये अगर ग्राफ है, ये जो बेल बन रहा है इसका जो टॉप है, इट इज द मीन ऑफ दिस ग्राफ, सो विथ इट यू कैन लोकेट द मीन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केल। ठीक है, स्केल, तो स्केल क्या बताता है, हाउ इट टेल्स अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हाउ फ्लैट द ग्राफ विल बी इज प्रेडिक्टेड बाय स्केल। एंड साइज, साइज क्या बताता है, साइज टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द रिटर्न ग्राफ। ठीक है, शेप कैसा होना चाहिए। सो एंड द फंक्शन which is used to calculate the normal dist or plot the मतलब to get the normal distribution, it is random dot normal। ठीक है, रैंडम डॉट नॉर्मल। तो देखते हैं बेसिकली ये नॉर्मल क्या चीज है। सो लेट्स सी हाउ टू प्लॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो फ्रॉम numpy import random, then okay, after this import cborn as sn। next, import matplotlib dot py plot as plt। नेक्स्ट, आगे देखते हैं sns dot dist plot
ठीक है, अंदर डालो रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है, रैंडम डॉट नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर साइज इज इक्वल टू 100, log is equal to 1, and scale is equal to 2. All right, and here you just write plt dot show. जैसा कि देख सकते हो पीछे क्या बन चुका है, ग्राफ बन चुका है, और इसका जो मीन है, इफ यू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस ग्राफ इट इज इक्वल टू 1, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू 2, ठीक है, and the size is 100, that is the shape has been confined to 100. So this is how you plot the normal distribution. Normal distribution graph का बहुत ज़्यादा काम है हार्ट रेट प्रोजेक्ट्स वगैरह में, फिर IQ लेवल नापने में, मैं बहुत सारे मेजरिंग मतलब मेंसुरेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब में बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है, ठीक है। और फिर से अगर तुम यहाँ पे कोई इस हिस्टोग्राम को रिमूव करना चाहते हो, जस्ट यूज हिस्ट इज इक्वल टू false, ठीक है। So this is all about normal distribution, ठीक है, this is normal distribution। और अगर तुम्हें हाँ अगर तुम्हें बाय एनी चांस कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करना हो, then you can take the guidance of data readers, ठीक है, we are always open, and बहुत जल्दी हम लोग एक दो प्रोजेक्ट वीडियोस तो अपलोड करेंगे जहाँ इन द वीडियो लाइव वी विल बी क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यूजिंग वेरियस पाइथन tools like NumPy, normal distribution, then we will be learning about binomial distribution, then various other things which we will be covering in the future lectures, ठीक है। So guys, uh, as I said, ठीक है, as I said, we have covered a lot, and this is all about our new courses, ठीक है, 599 each, and if you use the code SLive then the price reduces by 10%. You get a whooping discount of rupees 60, and you can avail the any of these two courses at just rupees 560. All right, जैसा कि जानते हो अहमियत बहुत ज़्यादा है TSA और SQL का और DBMS का, तो तुम लोगों को अगर इन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए, एंड इफ यू वांट टू बी एन अर्ली बर्ड इन योर प्रिपरेशन, बहुत फर्स्ट ईयर्स का ऐसा लगता है कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है, देखो टाइम कब निकल जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो बी एन अर्ली बर्ड एंड डू इट बिफोर अदर स्टार्ट्स, तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे और अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट, हैव अ वेरी गुड इवनिंग एज वेल, ठीक है, अच्छे से मतलब हैव अ नाइस डे जितना पार्ट बाकी है आज के दिन का, एंड अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। वी विल बी लर्निंग अबाउट U function and other binomial distribution and all in the coming class, ठीक है। So thank you very much guys for being patient, and please like, follow and subscribe to our channel, and please share it with your friends, help us reach more and more to the ones who really need our help. Thank you very much.